की रिएक्शन चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट अनीस और मेरे साथ मौजूद है मुजाहिद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई, आपको मैं बता रहा था कि आज मैं मकसद है कि जो है ना बहुत खुश हूँ। क्यों? हालांकि कब का हमने चैनल बनाया हुआ है, तकरीबन हमें 15-20 दिन हो गए हैं चैनल के ऊपर प्रॉपरली जो है ना वीडियोस डालते हुए और लोगों के कमेंट्स पढ़ते हुए जो है ना काफ़ी हेटर्स भी आते हैं, गलत कमेंट करने वाले भी आते हैं और बाकी कमेंट करने वाले भी आते हैं। लेकिन आज की जो हम वीडियो मकसद है कि जिसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही कमाल की वीडियो है और एक भाई ने हमें रिक्वेस्ट किया है इसके लिए और क्या कमाल का उन्होंने मकसद है कि कमेंट में लिखा है। हकीकत में इम्प्रेस मकसद है कि हमें एक खुशी हुई है उन भाई के मकसद है कि जो ना उस कमेंट की वजह से मैं तो हकीकत में जो है ना उनको थैंक यू सो मच भी मैंने उनको रिप्लाई भी किया और मकसद है कि जो है ना उनका भाई के जो है ना मकसद है कि जो नाम तो उन्होंने अपना लिखा हुआ बट जो है ना उनका जो है ना है इंडियन बर्ड मकसद है कि जो है ना इनका नाम है चैनल या मकसद है कि जो इन्होंने क्रिएट किया होगा जिस नेम से उनका मकसद है कि जो इंडियन बर्ड है। हाँ, ये आपके सामने जो है नीचे चल भी रहा होगा, ठीक है ना। इंडियन बर्ड इनका मकसद है कि नाम है और इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा हमें कमेंट किया। आप भी पढ़े और हम आपको बल्कि पढ़ के भी सुनाते हैं। इन्होंने कहा भाई आपके रिएक्शन मुझे बहुत अच्छे लगे। यू गाइज आर अमेजिंग, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस विद लव PAK वर्सेस इंडिया, प्लीज रिएक्ट ऑन, नीचे लिंक दिया उन्होंने। बहुत ही कमाल का हकीकत में कमेंट, मेरा यकीन मानो खुशी का कोई हाल नहीं था हकीकत में, क्योंकि मेरे पास इस किस्म का पहला मकसद है कि कमेंट है जो इतना मोहब्बत भरा और जो है ना मुझे इंप्रेस करने वाला के मकसद है कि जो है ना मैं अपने जो है ना काम में किस तरह जा रहा हूं, कैसी वीडियोस के ऊपर रिएक्ट कर रहा हूं और किस तरह मकसद है कि जो है ना मेरा चैनल आगे ग्रोथ कर रहा है और पब्लिक के पास मेरी जो मकसद है कि कंटेंट जा रहा है, मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं वो पब्लिक मेरी मकसद है कि जो है ना वो लोग वो जो हमारे सब्सक्राइबर जिन्होंने हमें मकसद है कि ज्वाइन कर लिया हमारी वीडियोस को देखने के लिए, ठीक है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये कमेंट्स जो है ना एक इंसान के लिए बहुत मायने रखते हैं हकीकत में। अगर बंदा जो है ना सही माने अगर जो है ना यूट्यूब पर काम करना चाहता है, लोगों के दिलों में घर करना चाहता है, मेन बात ये यूट्यूब पे काम को छोड़ दो, ठीक है ना। पैसा कोई चीज नहीं होती दोस्तों, पैसा आपके पीछे भाग के आएगा अगर आप दोस्तों को, लोगों को, भाइयों को मकसद है कि जो आपकी वीडियोस को देखते हैं प्रॉपरली, आपका मकसद है कि जो है ना एक वो, क्योंकि सारा काम होता है मुजाहिद भाई ऑडियंस के सर पर, बिल्कुल ठीक है ना, लोगों के सर पर होता है, दोस्तों के सर पर होता है। जो दोस्त ना हो तो जो दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, ठीक है ना, दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है, हम मकसद है कि और हमारे जो है ना रिएक्शन के अंदर और मकसद है कि खूबसूरती हम तराश रहे हैं, ये तराश मकसद है कि इनकी वजह से रहे, जो हमारी गलती कोताही होती है ये हमें बताते हैं और उनकी कमेंट्स को हम नोट भी करते हैं, ठीक है ना। काफी सारे कमेंट्स हमने नोट किए हैं, आपको भी मकसद है कि पता चल गया होगा कि हमने कौन से कमेंट्स तब्दीली आ गए, बट हम कुछ बताते नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बंदा बताता हुआ, बट आपने कमेंट में भी वो जो है ना तब्दीली नहीं बतानी, मेहरबानी करनी है, ठीक है ना। बहुत ही कमाल का हकीकत में इन्होंने मकसद है कि जो ना कमेंट किया तो मैंने इनको रिप्लाई भी किया, थैंक यू सो मच का। तो जो है ना मैंने इन भाई को कहा कि ठीक है भाई, बिल्कुल आज आपकी वीडियो के ऊपर रिएक्ट लाजमी करेंगे हकीकत में। और मैंने इनकी वीडियो का जो लिंक उन्होंने दिया था मकसद है कि जो ना वो वीडियो ओपन की, देखी, वो थी इंडिया द फ्यूचर सुपर पावर के मकसद फ्यूचर सुपर पावर के ऊपर मकसद है कि जो है ना एक वीडियो थी। तो जो है ना मकसद है कि मैंने कहा इसको बस ठीक है, बस वीडियो जैसी भी हो वीडियो को बाद में देखूंगा, उसका वीडियो का सिर्फ मैंने टाइटल देखा, बाकी अब वीडियो देखते हैं वीडियो के अंदर क्या चीज़ है, इस भाई ने हमें क्या तोहफा मकसद है कि जो है ना रिएक्ट करने के लिए दिया, कौन सा तोहफा हमें ऐसा दिया कि जो है ना मकसद इतने मोहब्बत भरे कमेंट के साथ हमें जो है ना एक तोहफा वीडियो का लिंक दिया। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर रिएक्ट करो, तो अब हम भी अभी देखेंगे कि जो है ना इस वीडियो के अंदर क्या है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है हमारी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। In the year of 1947, 1947 decided to leave India, but just before they packed their bags, they had made India bleed even more by pushing it into a deadly civil war. Who would have thought at that time that just in a few decades
Indian companies would be buying and taking over the top British brands like Jaguar, Range Rover, or the famous tea brand that we know as Tetley. Who would have imagined that an Indian brand Tata would buy a steel company Coros and provide jobs to the British in their own land, but without making it a colony? Actually, I will not be very surprised if this video will shock the international community a bit. When you hear the word India, the images that come to your mind are something like this. When the media in your country talks about India, they show you clips like this. But what they are not showing you and what they are actually hiding from you is that India also looks like this. Who could have thought a few decades earlier that the British government would be panicking and calling a special session of parliament when an Indian company Tata would decide to sell their brand Tata company India which would be making thousands of British jobless? Who could have thought that in just a few decades after the independence from the British, an Indian company Tata would actually become the biggest private sector employer of the UK? It took just a few decades for the Indians to show what they were capable of, and all of this was done in a complete fair business environment, not by colonizing, looting and killing as the British did. And I am not talking about just one Indian brand. Today, there are many brands and individuals from India who are creating huge business empires on the land of the UK. But Indians are not here to take any revenge or prove a point. They are just doing what they have been always good at, and that is not just yoga, Ayurveda or IT. Indians who are the masters of spirituality are also masters in business. Indian economy has finally gained momentum, and mind you, it has not got to the fifth gear yet. Probably it is still in the second gear, but what is surprising that even in the second gear it has already become the fastest growing major economy in the world, already taking over China in that regard. And India still has so much of unutilized potential which is lying in its reserves. Now let's talk about the major industries of India. IT sector. India is the world's largest sourcing destination for the information technology industry, accounting for approximately 67% of the 124 to 130 billion US dollars market. India ranks third among global startup ecosystems with more than 4,200 startups. Science and technology. India, a country which is a nuclear power, also ranks third among the most attractive investment destinations for technology transactions in the world. The Indian Space Research Organization, ISRO, has completed its mission of developing India's independent navigation system by launching Indian Regional Navigation Satellite System, which means India has its own version of what in the West we know as GPS. India is constantly helping other countries like Singapore, Germany, UK, and many more to launch their satellites as well. It has successfully undertaken space mission to Moon and even Mars. Pharmaceuticals sector. The Indian pharmaceuticals market is the third largest in the world in terms of volume, and India is the largest provider of generic drugs. Gems and jewelry sector. India is one of the largest exporters of gems and jewelry in the world. They are a hub of semi-precious and precious stones. How many of you actually knew that 95% of diamonds in the world are cut, polished, and processed in India? And most of it happens in just one city of India, that is called Surat. Healthcare sector.
India is fast becoming a hub of medical tourism of both types of healthcare, modern medicine and natural, which includes Ayurveda and other natural treatments. It has the advantage of the new state-of-the-art hospitals and well-trained and high-skilled professionals, which is supplemented by its low cost. The cost of surgery in India is about 1/10 of what in the US or Western Europe. India is a top destination for you, whether it's about natural treatments, a heart surgery, a cosmetic surgery, or a dental treatment, which your country's natural insurance may not be covering. Real estate sector. India is building future cities of the world with a massive plan of building 100 smart cities. To give you an example, over 5 million homes are under construction just in the national capital region of India. A majority of people in India still live in villages, and India is preparing itself for the biggest migration of its people from villages to the cities at a scale which the mankind has probably never seen before. Infrastructure sector. India is growing its infrastructure at an unbelievable speed. Did you know that its capital already has around 250 kilometers of modern metro rail? And it's going to add a few hundreds more, which is going to make it the biggest in the world, close to Shanghai. Almost all its major cities are seeing the rapid development of metro, and the construction of bullet trains connecting the major cities are underway too. Not just that, India is developing infrastructure in the other parts of the world and growing its influence by making ports and developing other mega infrastructure outside India too. Automobile sector. Apart from all the international companies which are lining up to make the most of India's automobile market, which is literally exploding, India's own brands are not far behind. From the premium brands of Jaguar and Range Rover to the cheapest car Tata Nano, India has it all. You will be surprised to know that India has a long list of its own automobile brands like Mahindra, Hero, TVS, Ashok Leyland, Bajaj, Force Motors, Eicher, just to name a few. Hero is the world's largest manufacturers of two-wheelers. Mahindra are another big name who were very close to the acquisition of Alfa Romeo a while ago. Agriculture sector. India is the largest producer, consumer and exporter of spices and spice products. It is also the source of the delicious mangoes, pulses and famous basmati rice that is known for its taste and fragrance around the world. The good news is that the northeast part of India has its agriculture based on the traditional organic farming, which has been untouched by the failed scientific experiments of fertilizers and genetic seed modification. How many of you actually knew that India, which is nearly half in area of China, and the US actually has more arable land than China and is second largest in the world, only marginally behind the US? Also, other sectors of India are worth a mention here, such as cement industry, which is the second largest in the world. Also, India is growing rapidly in biotechnology, aviation, banking and insurance, film industry, media and entertainment, and many more. It is also a big exporter of textiles, which includes finest silk, pashmina, leather, and marble. Besides, how many of you actually knew that some of the top brains in the world are either Indian nationals or of Indian origin? Sundar Pichai, an Indian who has studied in the Indian Institute of Technology, is now the CEO of Google. Satya Nadella, who is the CEO of Microsoft, is a graduate from Manipal Institute of Technology in India. The CEO of Adobe Systems is also an Indian, and his name is Shantanu Narayan. And these are just a few names. There is a long list of global CEOs from India. So no matter where you are in the world, whatever country you may belong to, whether you are a young boy or a girl,
in a primary school or a college, you must know that sooner or later you will have to have something to do with India. And it is inevitable because India is fast establishing itself as a top 3 economy of the world, and its true potential is even bigger than that. So it's better that you start educating yourself about the rising economic powerhouse that we know as India, because your future belongs here too. And as I have said earlier, India is not just developing, India is reclaiming. See you again. बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हकीकत में वीडियो बहुत अच्छा, इस प्यारी है। वीडियो के अंदर जो है ना सारी कंप्लीटली तौर पर जो है ना जो है ना समझाया गया, बताया गया कि 1947 के बाद जब तरक्की की, कैसे उनको मकसद है कि जो है ना कैसे सारा सिस्टम, मकसद है कि उन्होंने, हालांकि जो है ना जब वो गोरे गए तो फिर वो मुल्क में खसारा ही छोड़ के गए होंगे कि जो है ना वो कुछ और लूट मार करके जो है ना सारा कुछ छोड़ के, मकसद खसारा छोड़ के गए। तो इस वीडियो के अंदर सब कुछ तरतीब से बताया गया कि फिर इंडिया ने ग्रोथ कैसे की और कौन कौन सी कंपनियां जो है ना इंडिया के अंदर वर्क कर रही हैं, चाहे वो बाइक्स को ले लें, कार्स को ले लें, मोबाइल्स को ले लें, जो है ना टाटा की कंपनी हो गई, और भी मकसद है कि पता नहीं कितनी कितनी कंपनीज हैं, उसके ऊपर भी जो है ना वो तो सर्च करना पड़ेगा। बताया गया, मुख्तसर बात है कि जो है ना ये वीडियो के अंदर कंप्लीटली बताया गया कि जब 1947 के बाद इंडिया, मकसद है कि जो है ना इंडिया ने कैसे फिर ग्रोथ की, अपने आप को कैसे, मकसद है कि सुपर पावर बनाया। इस वीडियो के अंदर सारा कुछ ये समझाया गया। बहुत ही कमाल की वीडियो थी, हकीकत में बड़ा मज़ा आया मुझे जो है ना वीडियो देखने का। बिल्कुल कंप्लीटली तौर पर जो है ना इन्होंने बिल्कुल समझा दिया है, हम बता दिया, बल्कि दुनिया को बता दिया कि जो है ना हमें क्या बताना, बल्कि दुनिया को बता दिया कि जो है ना कि इंडिया ने कैसे 1947 के बाद मेहनत की। हाँ, अभी जो है ना जैसे मकसद है कि जो है ना जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे इंडिया के अंदर जो है ना और भी पता नहीं कितने कितने मकसद है कि तरक्की याफ्ता काम होंगे, और भी पता नहीं इंडिया कितने मकसद है कि रैंक में आएगा, किस ग्रोथ में आएगा, कितनी मकसद है कि उसके अंदर जो है ना एक तब्दीलियाँ हो रही है, जैसे इंडिया के अंदर वो जो है ना खूबसूरत से खूबसूरत तर होता जा रहा है हकीकत में। तो वही बात आगे मुजाहिद भाई, मैं आपको बार बार वीडियो में कहता हूं कि 2030 में इंडिया कैसा होगा। मैंने पता नहीं कितनी वीडियोस में जो है ना इनको कह चुका हूं कि 2030 का बस हमें इंतजार करना है कि 2030 में इंडिया कैसा लगेगा। हकीकत में हम इंतजार में है, ठीक है। तो इंडियन बर्ड ब्रदर का जो है ना बहुत बहुत थैंक्स, उन्होंने जो है ना अच्छी वीडियो का लिंक हमें दिया। जो है ना हमने वीडियो हालांकि देखी नहीं, सिर्फ इनकी जो है ना एक इखलाक, इनकी मोहब्बत को जो है ना कमेंट जो है ना उन्होंने किया, उसके ऊपर हमने इस वीडियो को सिलेक्ट किया। हमने कहा जो है ना जिस तरह मोहब्बत से भेजा है इन्होंने हमें लिख कर, तो इन्हें लिंक भी अच्छा ही होगा, तो हमने सिर्फ थंबनेल देखा और सिलेक्ट किया वीडियो को और आपके सामने तमाम दोस्तों के सामने इसको पेश किया। यकीनन आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रिएक्शन वीडियो पसंद है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये हमारी जो है ना रिएक्शन वीडियो अच्छी लगी है या बुरी लगी है, ठीक है। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को आगे शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए, उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए रिएक्शन के साथ। अभी तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।